मो रंजीत OSSC WEO प्रीलिम सिलेबस अनुसार हिस्ट्री रू किछि क्वेश्चंस नहीं कि आसी पार्ट नंबर 2 रे जो माने पार्ट नंबर 1 देखि नांदी ए वीडियो सरला परे जाई कि देखि नेबे आपन पई बहुत काम रे आसीबो। तो चलंतु स्टार्ट करिबा रिवीजन। पार्ट 1 रे हमें 43 क्वेश्चंस रिवीजन करथिले, एबे 44 नंबर क्वेश्चन रू स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया डालहाउसी कोन करथिले? एनकरेज्ड industries, patronized agriculture, introduced railway and telegraphs, introduced postal system. तारा correct answer हबो introduced railways and telegraph. Next, the Indian states that were annexed invoking the doctrine of lapse included को जगह देखो ए वीडियो रे केवल मॉडर्न हिस्ट्री रो क्वेश्चंस अच्छी। तारा करेक्ट आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर, सतारा। नेक्स्ट, द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वाज कौन थिला? The creation of employment opportunities for native Indians, the spread of Western culture in India, the promotion of literacy among the people using English medium of language. तारा correct answer कौन होगा? Option number C, the promotion of literacy among the people using English medium of language. The ILBERT Bill controversy during Lord Ripon's time related कहाँ सहित रिलेट थिला? देखो क्वेश्चन जदि इजी लगुच कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे जे क्वेश्चन लेवल टे बढ़िया पाई, क्वेश्चन जदि टफ लगुच देन कहबे टिके क्वेश्चन लेवल कम करिया पाई। टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस ऑन par as far as the criminal jurisdiction of courts was concerned, to impose severe restrictions on the freedom of the native press as it was perceived to be hostile to colonial rulers, to encourage the native Indians to appear the civil service examination by conducting them in India, to allow native Indians to possess arms by amending the Arms Act. तारा correct answer कौन होगा? ILBERT Bill controversy. तारा correct answer होगा to bring Indians and Europeans on par as far as the criminal jurisdiction of courts was concerned. The state of Jhansi was made a part of the British Empire in India through the policy of Doctrine of Lapse, the policy of subsidiary alliance, Mayo's provincial settlement, war against Gangadhar Rao. The correct answer will be option number A, the policy of Doctrine of Lapse. जो जगह आपन किछि भूल पाइबे जदि किंबा डाउट पाइबे जदि कमेंट बॉक्स रे कमेंट निश्चित करिवे। A public works department was set off in India by public works department कहा द्वारा सेटअप करा जाइतला? तारा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डालहाउसी। द ब्रिटिश रूलर्स introduced a new system of education in India chiefly because they wanted to कौन चाहते? Provide a class of office workers for company, create an awareness of scientific and technical developments, promote the work of Christian missionaries, generate the capacity for self-government. The correct answer हबो provide a class of office workers for company. Which of the following land tenure system was introduced by Lord Cornwallis? महलवारी, रायतवारी, जमींदारी, इनामदारी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी। देखो एंशिएंट हिस्ट्री हो कि मॉडर्न हिस्ट्री हो कि मिडिवल हिस्ट्री हो, आपन को टॉपिक रो अधिक क्वेश्चन चाहउछन्ती आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे। नेम द ट्राइब व्हिच रोज इन revolt against the British for suppressing the practice of human sacrifice. Naik Das, Kones, Cookies, Orans. तो यार correct answer of option number B, Kones. The purpose of the Whitley Commission was, main purpose कौन थिला? To look into the problems of minorities in India, to suggest measures to improve conditions of laborers, to enable political parties in India to reach a consensus on the constitutional questions, none of the above. तारा correct answer हबो to suggest measures to improve conditions of laborers. After the assumption Diwani, the British East India Company started realizing tribute from India to England in the form of
तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी कॉटन टेक्सटाइल सिल्क एंड टी नेक्स्ट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज नॉट एसोसिएटेड विथ रोहिला वार चैत सिंह केस अफगान वार नंद कुमार केस का सहित एसोसिएटेड नथिले तो करेक्ट आंसर हम अफगान वार हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस क्या लिबरेटर ऑफ द प्रेस कह जाए बेंटिक हेस्टिंग मेटकैफ तार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी मेटकैफ द फर्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज पास्ड इन कोई ईयर पास है फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट तार करेक्ट आंसर हम 1861 रे 1861 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कहा द्वारा होता बहुत इजी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन तार करेक्ट आंसर हम लॉर्ड डालहाउसी Which of the following are the three landmarks of Dalhousie's administration? Indian Railways, Public Works Department, English as a medium instruction, Telegraph. तो जना पड़ जाउची कारण डालहाउसी रिलेटेड जहाँ भी डाटा आपको मन रखा पड़ो इंडियन रेलवेज ठीक अच्छी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ठीक अच्छी टेलीग्राफ ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर सी नुह Who among the following is associated with the Local Self Government Act? क्या associate थे Local Self Government Act पे? तारा correct answer अब Lord Ripon. Lord Ripon. Which of the following was a recommendation of Hunter Commission? या विद्रो कोटा recommendation थिला Hunter Commission रो gradual withdrawal of state support from higher education, women's education, new regulation for the organized Senate's system, introduction of civic education at college and university level. तारा correct answer अब gradual withdrawal of state support from higher education. Which of the following pairs are correctly matched? कोटा correctly match अच्छी Warren Hastings regulating act ठीक अच्छी Cornwallis permanent land settlement ठीक अच्छी Wellesley subsidiary alliance ठीक अच्छी Dalhousie abolition of sati एटा होबो नहीं तो करेक्ट आंसर कौन हम ए बी सी तीन टाक ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा अच्छा अबोलिशन ऑफ सती कहा टेन्योर होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनइबे द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 adopted by Lord Lytton intended to help English newspapers promote freedom of the press restrain newspapers published in Indian languages curb freedom of the press in general तार करेक्ट आंसर हम restrain newspapers published in Indian languages. Which British Governor General introduced postage stamp in India? Postage stamp. तार करेक्ट आंसर हम Lord Dalhousie. Next, the most important reason of the decline of urban handicrafts was. Important reason कौन? Decline of urban handicrafts. Competition from cheaper machine-made goods imported duty-free from Britain. The railways, which helped the dealers to distribute machine-made goods at the expense of handicrafts. Monetization of the Indian economy, growth of modern industries in India. तारा correct answer अब option number A, competition from cheaper machine-made goods imported duty-free from Britain. Who was the only Governor General or Viceroy to be assassinated in India? तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम Lord Mayo. Lord Mayo. Next, the subsidiary alliance was aimed at. तार एम कौन थिला subsidiary alliance रो protecting the country from Napoleon, increasing British revenue, increasing British control over the Indian states रो spelling भूल अछि taking away the powers of local rulers. तार करेक्ट आंसर हम 1, 3 and 4 protecting the country from Napoleon, increasing British control over the Indian states, taking away the powers of local rulers. 1, 3 and 4. Next, arrange the following governors general chronologically. chronologically जदि देखिबा कोटा फर्स्ट किए प्रथमे आसीबे तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी प्रथमे लॉर्ड मैटकैफ तापरे लॉर्ड ऑकलैंड तापरे लॉर्ड एलेनबोरो तापरे लॉर्ड हेस्टिंग्स फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग लास्ट रे नेक्स्ट
Peasants lost their rights over the land cultivated them due to the Malwari settlement, the permanent settlement, the Rayatwari settlement, none of the above. There correct answer of option number B, the permanent settlement. Which one of the following pairs is not correctly matched? Kota correctly matched nahi boli kuha jaichi. Pitt's India Act Warren Hastings, Doctrine of Lapse Dalhousie, Vernacular Press Act Curzon, ILBERT Bill Ripon. तो करेक्ट आंसर हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नुह ताले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समय किए थिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकी जणेबे. अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order who administered as Governor General as India. Wellesley, Cornwallis, Warren Hastings, Dalhousie. प्रथमे Warren Hastings, then Cornwallis, then Wellesley, then Dalhousie. Dalhousie जे कि 1856 रे तांको टेन्योर शेष होला. नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर इलीगल बाय कहा द्वारा? तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक. लॉर्ड विलियम बेंटिक. हु अमंग द फॉलोइंग वाज impeached in England for his action in India? Who among the following was impeached in England for his action in India? The correct answer will be option number B, Warren Hastings. Who was responsible for the introduction of English as the official language in India? The correct answer is option number B, Sir Charles Wood. Sir Charles Wood. The earliest public association formed in the history of modern India in 1837 was? The earliest public association formed in the history of modern India in 1837 was the Landlord Society, the Bengal British India Society, the British India Association, the Madras Natives Association. Correct answer of the Landlords Society. Who among the following has started the Public Works Department in India in 1848? 1848 रे किए थिले? तार करेक्ट आंसर कौन हम? लॉर्ड डालहाउसी. ठीक अच्छे. नेक्स्ट, in which of the following years was the first railway line between Bombay and Thane laid? को वर्ष प्रथम स्टार्ट हला? तो करेक्ट आंसर हम 1853. नेक्स्ट, the cause of decline of textile industries in the 18th century in Bengal was? रीजन कौन थिला डिक्लाइन हबार? Decline in quality of production, non-availability of raw material, high tariff rates on exports to Britain, non-availability of craftsmen, none of the above. There correct answer of high tariff rates on exports to Britain. First railway line were laid down in India under which British governor? बहुत easy question है गला. Correct answer कौन होगा? Lord Dalhousie, 1853. Next, who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? The correct answer is Dadabhai Naoroji. Dadabhai Naoroji. The English introduced Rayatwari settlement in Bengal Presidency, Madras Presidency, Bombay Presidency, Madras and Bombay Presidency. English introduced Rayatwari settlement in Madras and Bombay Presidency. Who is credited with the introduction of permanent settlement in Bengal and Bihar? जानिया दरकार. तार करेक्ट आंसर कौन हम? लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस. Who was associated with Rayatwari settlement of Madras? तार करेक्ट आंसर हम मुनरो. लॉर्ड मुनरो. नेक्स्ट, permanent settlement was a feature of जमींदारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम, Mahalwari system, Bisodwari system. Permanent settlement was a feature of. The correct answer about Jamindari system. In India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was कौन थिला? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध जहाँ भी पढ़ी पारे कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, नन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक. क्लियर? तो ये क्वेश्चन थिला पार्ट नंबर 2 रे. बेसिक क्वेश्चन आनी कम क्वेश्चन आणुची जोटा कि वीडियो देखिया भी इजी हम आपण मन रखिया इजी हम और प्रैक्टिस ठीक रहिबो.
तो वीडियो केमती लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनइबे और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते सब्सक्राइब करके निजर सपोर्ट निश्चित देवे प्रथम शेष जाए देखि धन्यवाद।